हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंट पॉल स्कूल किशनगढ़, जहां हमारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में अबाकस सीख रहे हैं। फिंगर जिम एक्सरसाइजेस, मेंटल कैलकुलेशंस और हैंड्स ऑन अबाकस प्रैक्टिस के जरिए वे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को आसानी से सॉल्व कर रहे हैं और अपने पीयर्स को कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अबाकस से बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है, उनकी मेमोरी शार्पर बन रही है और वे फास्टर थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं, जिससे मैथ फन और एंगेजिंग बन जाता है। देखिए हमारे स्टूडेंट्स को एक्शन में और एंजॉय कीजिए उनकी लर्निंग जर्नी। Previous class we have done multiplication using Abacus scale. So let us revise once again. Let's see how students are performing using Abacus scale multiplication. So my question is, Akshit, you have to solve it. If I give a question 24 multiply 6, 2 digit with 1 digit. Can you solve it using Abacus scale? See, first 24 will come here. 24. In this question, 20 is the here is the tens place and here is the ones place. 24 multiplied by 6. So 6 will come here. It is the ones place only. There is no tens place. Only 6 is there. And it is 24. So like we do in the copy, we separate. So first we multiply 6 with one digit number. That 6 multiplied by 4. 6 4 are 24. So 24. Now we multiply 6 tens place number 2 means 6 2 are 6 2 are 12. So in the copy 24. If you write in the copy 4 is the ones digit and 2 is the carry number of the tens place. In the copy we do like this.